देना होता है, एंड यू गेट 25 to 30 लाख रुपीज का स्टॉक, विच इज 100% रिफंडेबल। एंड इसमें आपका जो चर्निंग आता है, मतलब एवरी 6 मंथ्स हम आपका सारा का सारा स्टॉक वापस लेते हैं जो भी अनसोल्ड होता है। तो आपके लिए कोई भी रिस्क नहीं है उसके अंदर, ये जीरो रिस्क प्रोपोजिशन है, आपका जीरो डेड स्टॉक है। ग्रॉस मार्जिन हम लोग देते हैं 28% नेट ऑफ टैक्सेस। दैट मीन्स टैक्सेस हम लोग बेयर कर रहे हैं, जो भी 10-12% टैक्स आता है वो हम बेयर करते हैं, और आपको फ्लैट आपका सेल्स के ऊपर 28% मार्जिन मिलता है। एंड एज पर आर कैलकुलेशन आपका जो ROI आता है एवरेज, वो 100% से ऊपर का आता है। अगर मैं 5 साल 6 साल का कैलकुलेशन लूंगा तो एवरेज 100% का आपका ROI आएगा। मतलब आपने 12 और 3 15 to 16 लाख रुपीज आपने इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर आपका हर साल एवरेज 12-15 लाख रुपए वापस आता है। अगर मैं पे बैक पीरियड की बात करता हूँ, आपका जितना टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 18 to 20 मंथ्स में पूरा का पूरा पैसा वापस आ जाता है। गारमेंट लाइन में अच्छी चीज ये है कि जो स्टोर है वो तकरीबन 9 साल चलता है। आपने आज स्टार्ट किया तो 9 इयर्स तक वो स्टोर कम से कम चलेगा। यही फूड इंडस्ट्री की बात करता हूँ, तो फूड इंडस्ट्री में आपका पे बैक पीरियड कंपैरेटिवली फास्टर होता है, लेकिन 2-3 साल के अंदर वो बिजनेस बंद हो जाता है। तो ROI जो है हमारे गारमेंट के अंदर स्टार्टिंग में कंपैरेटिवली इसीलिए 18 to 20 मंथ्स लगते हैं, उसके बाद आपकी ग्रोथ बढ़ती चली जाती है। लॉक इन पीरियड की अगर हम अग्रीमेंट की बात करते हैं तो हमारा 5 इयर्स का अग्रीमेंट रहता है मिनिमम। वी कैन एक्सटेंड इट अप टू 9 इयर्स। एंड और इसमें 3 इयर्स का एक लॉक इन पीरियड रहता है कि आप और हम मिलके कम से कम स्टोर मिनिमम 3 इयर्स तो चलाएंगे। दिस इज द ब्रांड सपोर्ट दैट वी प्रोवाइड। ब्रांड सपोर्ट के नाम पे हम लोग आपको डिटेल में साइट सेटअप का सपोर्ट देते हैं, जहां पे हम आपके लिए साइट इवेल्युएट करके देते हैं, आपको लेआउट में हेल्प करते हैं, आपको सेटअप में हेल्प करते हैं। हम आपको कंप्लीट ऑपरेशनल SOP और सपोर्ट देते हैं। सो ऑपरेशनल SOP में क्या आएगा, जितने भी आपके ऑपरेशन है उसको स्ट्रीमलाइन कैसे किया जाए, सिंगल विंडो आपको SOP दिया जाएगा, ऑनगोइंग आपको असिस्टेंस मिलता है, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ऐड कर दिया जाएगा जहां पे कंपनी के हर हर मैनेजमेंट का हर बंदा उसके अंदर होगा, वेदर इट इज लॉजिस्टिक पर्सन, इट इज द डिस्पैच पर्सन, ऑर्डर पर्सन, और इट इज द IT पर्सन, एवरीवन इज गोइंग टू बी देयर। आपको कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग मिलेगी, चाहे वो प्रोडक्ट की हो, सेल्स की हो, ऑपरेशंस की हो, IT की हो, हर एक चीज की आपको कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है कंपनी की तरफ से। हमारा एक इंटीग्रेटेड पूरा ERP सिस्टम, CRM सिस्टम आपके आपके यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिसको आपको इंप्लीमेंट नहीं करना है, वो हम इंप्लीमेंट करवा के देते हैं। तो आपको वो हेडेक भी नहीं है। ये पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड है। मैंने आपको बताया था कि ऑफलाइन से भी अगर सॉरी ऑनलाइन से भी अगर मुझे ऑर्डर आया है और आपके यहाँ पे वो स्टॉक रखा हुआ है, तो आपको ऑर्डर वो प्लेस होगा और आपने सिर्फ पैक करके रखना है, लॉजिस्टिक पार्टनर आएगा और लेके चला जाएगा। एंड एवरीथिंग इज वेल सिंक्रोनाइज्ड एंड सपोर्टेड बाय द कंपनी। हम लोग देन सेंट्रलाइज मार्केटिंग सपोर्ट आपको देते हैं, एंड इवन हम लोग आपको स्टोर रिलेटेड मार्केटिंग सपोर्ट भी देते हैं। स्टोर रिलेटेड मार्केटिंग सपोर्ट क्या है, हम आपको 2% ऑफ योर रेवेन्यू हम आपको आपके स्टोर के लिए एक अलग से बजट एलोकेट करते हैं, जिसके लिए आपके यहाँ पे फुटफॉल आने के लिए स्पेशली वो बजट एक्सपेंसेस किया जाता है सेंट्रलाइज बजट के अलावा। देन 100% स्टॉक रिटर्न गारंटी है। आज आपके यहाँ पे हमने कहा 25 से 30 लाख का हमने आपको गुड्स दिया। पहली बात तो हर वीक रिप्लेनिशमेंट होती है, आपका जितना सेल्स होता गया हम आपको रिप्लेनिश करते गए। एंड ऑफ द सीजन कोई भी चीज जो अनसोल्ड है वो सारी की सारी 100% हम अपने पास रिटर्न ले लेंगे। देन फुली कवर्ड प्रमोशंस, आपको 100% कंपनी के तरफ से प्रमोशंस मिलता है, वेदर इट इज 20% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट। कोई भी ऑफर है, कोई भी डिस्काउंट है, वो कंप्लीट कंपनी बेयर कर रही है, आपके मार्जिन में से कुछ भी डिडक्शन नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, आपका जो मार्जिन है वो आपकी नेट सेल्स के ऊपर कैलकुलेट होगा, डिस्काउंट देने के बाद जो भी सेल्स आई देन उसके ऊपर आपको फ्लैट आपको मार्जिन मिलेगा। देन यू डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ GST ऑल्सो। सो कंपनी अपना GST, ये हमारा फोफो मॉडल है, फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल है। तो इसके अंदर आपका द ओनली थिंग इज कि हम अपना GST रखते हैं सो दैट यू डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ एनीथिंग एल्स। GST की प्रोसेसिंग हमें करनी है, पेमेंट्स हमें करनी है, उसके रिटर्न्स हमें भरनी है, सारी चीजें हम लोग करके देते हैं। देन वी हैव ऑटोमेटेड स्टॉक रिप्लेनिशमेंट, एज आई सेड आपका वीकली रिप्लेनिशमेंट होता है। ये भी हमारा बैकएंड पे ऑटोमेटेड पूरा प्रोसेस है, कि आपको क्या क्या चीजें आपके यहाँ पे
कोई साइज खत्म हो गया, आपका कोई कलर खत्म हो गया, आपको कोई पर्टिकुलर कैटेगरी आपकी मूव हो रही है, कोई प्राइस रेंज आपका मूव हो रहा है, उसके बेसिस पे, या कौन सा वाला सीजन आने वाला है, उसके बेसिस पे एक ऑटो स्टॉक रिप्लेनिशमेंट हमारी टीम आपके यहाँ पे करती रहती है। देन फ्री ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक। आपको कोई भी लॉजिस्टिक का कोई भी कॉस्ट बेयर नहीं करना है, वो कंपनी बेयर कर रही है, चाहे वो गुड्स जाते वक्त हो या वापस रिवर्स के टाइम पर। देन वी ऑल्सो प्रोवाइड टारगेट बेस्ड इंसेंटिव्स। तो एक पर्टिकुलर आपको टाइम टू टाइम, सीजन टू सीजन, आपको अलग अलग आपके स्टोर के बेसिस पे टारगेट्स मिलेंगे। इफ यू अचीव दैट, यू गेट गुड इंसेंटिव्स फ्रॉम द कंपनी। वी ऑल्सो रन लॉयल्टी प्रोग्राम। तो कस्टमर जो भी आपके यहाँ से बाय करके जाएगा, उनको वापस रिटर्न बुलाने के लिए हम लोग कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम रन करते हैं, उनको पॉइंट्स मिलेंगे। वो पॉइंट्स जो भी रिडीम आपके यहाँ पे होंगे, वो भी कंपनी पे करेगी। एंड इजी एक्सचेंज एट एनी लोकेशन पैन इंडिया। कस्टमर ने अगर ए स्टोर से बाय किया पंजाब में और वो दिल्ली आया है, तो भी वो जाके इजीली एक्सचेंज करा सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट और एनी प्रॉब्लम। दिस इज द इंटीग्रेटेड सिस्टम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। Okay, so this is the comprehensive brand support. I'll take you through the calculation sheet once, जहां पे आपको ये क्लियरली समझ में आएगा कि आपका जो ROI है वो कैसे इतना निकल के आएगा। जस्ट गिव मी वन सेकेंड। मिस्टर संदीप, कैन यू टेल मी इफ माय स्क्रीन इज विजिबल अगेन? There is a black patch. Okay, please just remove it. वन सेकेंड। इज इट ओके नाउ? Yes. ऑलराइट। तो दिस इज द कैलकुलेशन शीट वेर इन हम क्या कह रहे हैं, आपका अगर रेवेन्यू सिंपल कैलकुलेशन में पर मंथ 8.5 लाख रुपए के आसपास आता है, दैट मीन्स 1 करोड़ रुपए साल का आता है फर्स्ट ईयर में। एंड हर साल वो 20% बढ़ता है। रिटेल के अंदर एवरेज 35% इंक्रीमेंट आता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ 20% इंक्रीमेंट के साथ में कैलकुलेशन समझा रहा हूँ। अगर आपका 1 करोड़ रुपए का फर्स्ट ईयर में सेल आता है, जहां पे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हमारा रेंटल कॉस्ट इज 1 लाख रुपीज पर मंथ, तो वी आर टेकिंग अ कैलकुलेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10 to 12% ऑफ द रेवेन्यू। मतलब मेरा रेंटल जो है वो 10 to 12% का रेवेन्यू आना चाहिए। उस बेसिस पे 1 करोड़ का अगर मेरा है, आपको मार्जिन मिला 28% पे 28 लाख रुपीज। एवरेज इंसेंटिव हमारे जो लोग हैं उनको 2% के आसपास मिलता है। सो टोटल बिकम्स 30 लाख रुपीज। आपका जो कॉस्ट आएगा वो आएगा, स्टाफ कॉस्ट आएगा अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपीज पर मंथ, विच बिकम्स 6 लाख रुपीज पर annum। सो 50,000 रुपीज पर मंथ। आपको टोटल 3 लोग चाहिए। Then comes your administrative expenses, which includes rental, electricity, telephone, internet, repair, maintenance, post renewal, miscellaneous expenses. So let's discuss this. आपका रेंटल हमने बताया 1 लाख रुपीज पर मंथ आएगा, तो 12 लाख रुपीज आया। इलेक्ट्रिसिटी अप्रोक्सीमेटली 18,000 रुपीज पर मंथ हमने लिया विंटर समर का एवरेज करके, विच इज ऑन अ हायर साइड, नॉट ऑन अ लोअर साइड। फॉर 800 स्क्वायर फीट एरिया इट बिकम्स 2,16,000 रुपीज। इंटरनेट एक्सपेंसेस आपका 1,000 रुपीज पर मंथ, दिस इज ऑल्सो ऑन अ हायर साइड, 12,000 रुपीज। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एनुअल, हर महीने नहीं आता रिपेयर मेंटेनेंस, इसलिए हमने एवरेज एनुअल 50,000 रुपीज का लिया है। एंड देन आपका जो सॉफ्टवेयर का रिन्यूअल एक चार्ज आएगा, वो आएगा 18,000 रुपीज पर annum। एंड हमने मिसलेनियस एक्सपेंसेस, योर टी एक्सपेंसेस और मिसलेनियस डे टू डे के बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, वो हमने 5,000 रुपीज पर मंथ एवरेज लिया, 60,000। सो टोटल एक्सपेंसेस बिकम 15,56,000, 15,56,000 रुपीज। नाउ 6 lakh plus 15,56,000 becomes 21,56,000. So in your first year, you're getting a net profit of 8,44,000. Likewise, year on year, it starts increasing. तो हमने 20% के हिसाब से किया था। तो गुड थिंग इज, अब इन रिटेल जो आपका रेवेन्यू है ये तो इंक्रीज होता है, लेकिन आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो एज सच इतने इंक्रीज नहीं होते। दो, हमने यहाँ पे स्टाफ कॉस्ट इंक्रीज किया है हर साल, और रेंटल आपका फर्स्ट 3 इयर्स में रेंटल नहीं बढ़ता,
थर्ड ईयर के बाद फोर्थ और फिफ्थ ईयर में 15% बढ़ता है, तो हमने उसको भी कंसिडर किया है। तो हमने जो जहां जहां एक्सपेंसेस बढ़ते हैं वो हमने ऑलरेडी इसमें इंक्लूड करे हुए। सो लेट्स सी, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट वॉज 12 लाख रुपीज इन स्टोर, 1 लाख रुपीज अप्रोक्सीमेटली इन कंप्यूटर एंड सिस्टम्स, 3 लाख रुपीज इन ब्रांड फी, टोटल कैश आउटफ्लो वॉज 16 लाख रुपीज। And in the first year, you are getting 53%, then 88%, then 131, 172, 235. अगर मैं इसे क्यूमुलेट कर दूं, अगर मैं इसे जोड़ दूं, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट पे आपका 679% का टोटल रिटर्न आया। दैट मीन्स आपने जो 16 लाख रुपीज लगाए थे उसका 6.8 टाइम्स आया। मैं इसे सम टोटल करके दिखा देता हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी समवट मोर देन 1 करोड़ 8 लाख और 1 करोड़ 9 लाख रुपीज अराउंड, आपके 16 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट पे इन 5 ईयर स्पैन। एंड स्टोर जनरली आपका 9 ईयर्स तक चलता है। तो आप देखेंगे आपका जो पे बैक पीरियड है दैट इज 1.53, दैट मीन्स 18 मंथ्स, 18 महीने में आपका पूरा पैसा वापस आ जाता है। आपका पूरा पैसा रिकवर होने के बाद हर साल आपको सिर्फ प्रॉफिट है। या तो आप इस एंगल से देख सकते हैं, या फिर सेकेंड वे कि आपको रिटर्न आरओआई ऑन योर इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है। तो दिस इज योर आरओआई। So I think I am through with the calculation part and presentation part. If you have any question, please feel free to ask. I'm stopping my presentation now. So, thank you, Mr. Mukul, for summing up the presentation in a very detailed way. And during the course of your presentation, all the questions which actually came were answered, because I saw some questions which are coming in the chat box. That is, what's the stock correction for Bitnik? What's the marketing support? These are the questions which you are getting, and you have answered them really well. Thank you for the same. So, for our audience, our next step would be to get on a one-on-one call with Mr. Mukul to have an in-depth discussion and get on to a business opportunity and ultimately closure of the deal. So, I have given our hotline number and our email ID, that is feedback@franchiseindia.in. Please write to us. We'll get in touch with you. All the audience which are there, we'll get back to you with the tech and financials, and have get on a call with one-on-one basis, so that we can have more in-depth and meaningful discussion pertaining to your queries. Okay. Yeah, Thank you, Mr. Mukul, for your presence. thank you so much. Thank you Thank so you, much. everyone. Thank you for being there. So, Thank you. uh, our next brand is PN Rao, and this is again into a cocoa model. Uh, I I would invite Mr. Naveen Piche to join in this call. Uh, Audience, please be there. Or Mr. Naveen Piche is joining from the brand side. So our next brand is PN Rao. So let me set the context of this brand presentation. So PN Rao is a 100-year-old company which has got headquartered in Bangalore, and this they are into elite fashion for men. So whenever any brand, any our audiences who are from South Market, they know about this brand. When it comes to elite fashion, PN Rao is almost synonymous to that thing. And the headquarters is in Bangalore. We have 7 outlets in Bangalore and Chennai. Currently, we're looking for expansion almost in pan India, but mostly in South India, that is Bangalore, Chennai, Hyderabad, Coimbatore, Kochi, Vizag, Vijayawada. We are looking at a model where the investment is somewhere around 1.20 CR, and the area required is 2,000 square feet, right? So we are looking at a payback period of 3 years. So we are inviting Mr. Naveen Piche from BN Rao to talk about more about this brand and the business opportunity. He will be currently with us shortly. Just be there with us.
So I believe Mr. Naveen Bishe is joining, and he's just taking some time. He has some internet connection issue. He's just be with us. So in the meantime, if you can share your queries about the brand which I've just covered, Picnic, please feel free to share the same, and we will get in touch with you on a one-on-one basis. We have Mr. Naveen Pisheji on this call. He has joined. Thank you, sir, for being on this call. And I was just setting the context of our brand, that is PN Rao. So we have a 100-year-old organization who is into main fashion, elite main fashion, and we have got 7 outlets in Bangalore and Chennai. So welcome to this webinar, Mr. Naveen, and let me share the screen so that you can take us to the business opportunity. Yeah, thank you. Thank you so much, and looking forward to this session. Yes, so here I have shared the business opportunity. Please let me know if my screen is visible. Please take us through the scene. Yeah, thank you. First let us talk about a bit about the brand, and then we'll slowly move into the business opportunity which we have in hand. Yeah, absolutely. Yeah, good afternoon, everybody. My name is Naveen Pishe, and I am the partner at B&N Rao. I'm a third generation entrepreneur. And as you all would probably know, that B&N Rao is a 100-year-old brand based out of Bangalore. And we have 5 stores in Bangalore and 2 in Chennai, and we're looking to expand our business. And currently at B&N Rao, our focus is on suits. That we sell a lot of suits, and we also have a focus on a lot of our bespoke tailoring, where we sell one of the world's best fabrics from all around the world, and we have world-class tailoring facility with us. So our factory in Hoskote is one of the best-in-class factories. It's the only tailoring factory in India which has a 100% solar powered. We have a facility where we can make bespoke garments, made-to-measure garments, and we can also do ready-to-wear over there. So the facility is basically you can make even 1 piece and 1,000 pieces as well. So it's in such a manner that while I'm making 1,000 pieces, if I get a single piece order, I can make it on that same line 1 piece as well. So that makes our system very flexible, and we're able to manage the entire business from that one factory. You can go to the next slide. Yeah, so that's basically our mission. It's committed to represent fine products, tailoring and services, synonymous with style, with a blend of tradition, which means we hold our tradition, and also innovation and passion. We have our core values as well in the next page. Yeah, so this is basically a timeline. Since time is short, I don't need to get into this. It basically says that how we've last 100 years, how we moved from one space to another. Interestingly, my grandfather started as a ladies' tailor, and over a period of time, as the British left, we moved into menswear, and then we moved into suits, and now we are still making a whole lot of suits and occasion wear as well. You can go to the next slide, Sandeep. Yeah. So these are the products that we have, largely for men: ceremony wear, business wear, smart casual, ethnic wear, footwear, accessories, and fabrics. So ceremony wear is where we are now largely a player in. It's about 60 to 70% of our business. Most of the customers come to us with keeping an occasion in mind. So it could be a wedding in the family, or it could be a special occasion like a 25th wedding anniversary, or it could be a graduation day. And there are so many other occasions where you require clothes, and that's the majority of our business. And about 20 to 30% of our business is casual and business wear. Yeah, so these are the USP of our brand. So, for us, obviously, the entire model is moved around the customer. That the design different. What is a very advisory kind of a role. We don't force sell the customer. We understand his requirements, and we give him what we feel is need. And the why I'm saying this is very important. So the customer comes to us knowing fully well
that he's going to get the right advice and not something that just to sell and make a transaction. And we are constantly innovating. So we are always utilizing, though we are core with our tradition and heritage, we are always looking of new ways to do things faster, to do things better and get better design. Kind of stock in the store, we ensure that the quality is the best quality, premium and above. Only we don't have any low quality. And nothing, don't make unnecessary high profits. We keep fair profits. With this brand USP, you're probably wondering, hey, why is this company doing this? It's basically because it's one of our ways of assuring the customer that they don't pay for our inefficiencies, that our sourcing and supplying, vendors and all of those things have actually get into some sort of traceability, and the product is good and we're giving you at a fair value, not exorbitant pricing. So that's the brand USP for us. So these are the brands that we keep, and it's all international brands and Indian brands as well. So 80% what we sell is international brands and 20% of what we sell is local brands. You can move on to the next slide, Sandeep. Am I stuck? Yeah. So this is basically, the strategy that we have, the way we procure things. So we look at, like I mentioned earlier, we have a complete traceability of the fabrics, right? We get where it's manufactured and how we do things. And we're also looking right now to, expand in the category as well as expansion. So in geography, so we're looking at, casual wear, business wear, in addition to the, occasion wear that we have, which is already there in our stores now. And of course, through new franchises, we want to expand in geographies, focusing on South India. Yeah, so this is, as you can see, the men's suit market is a very large market. It's, it's a $98 billion industry and it's growing at about 6 to 7% per annum. You can change, yeah. And in addition to this, there's a whole lot of clients which are going into bespoke now. So you can see that there's a big shift from ready-made to bespoke. That's a premium bespoke. I'm not talking about, you just go to an ordinary tailor and get your job done. But people want the quality product and they want, bespoke style. They want it to be made that they want in the way they want to wear it. So that's becoming a huge trend, and people want to spend that extra premium money in terms of bringing it to fruition. So all the at one point of time, bespoke was meant only for the rich and famous and affluent. Now it's not so. So today we can see people coming in two-wheelers to our store and spending 30, 40, 50,000 rupees for a suit. So it's not that you only the premium and guys who can afford and spend a lot of money wants to come and shop with us. And a lot of people want the personalized product, so they want their name written on the shirt, they want their name written on their jacket, and things like that, and they want a particular a different color thread to be used certain places. So all those things we can do, and all of these things our factory can handle, and this is where the people want this kind of product, and that's so since we are targeting that, we are able to get more and more customers, and we're seeing a huge demand for this. Yeah, so yeah, that's about it. So if you look at the entire tailoring business, it's growing almost 10 to 15%, double the size of the ready-made market. So here's a quick construct of fast fashion. What we are seeing here. So at the bottom, there's a value market, then there's a mass market, and then there's a middle market. So where we fit in is the high-end fashion, luxury designers, and premium brands. This is where we fit in, and we're seeing the market is seeing a huge growth in this area. This is growing at almost 15 to 20%, whereas the entire menswear market is only growing at about 6 to 7%. This is where we are focusing on, and this is where we will get the advantage. And the other places is, of course, the entire country is in the growth phase right now. Last 8 years, it's been fantastic for us. And even our business has been growing, and that's where we feel that there's huge opportunities there. Brand strength, needless to say, we're a 100-year-old brand, and we are able to provide a lot of support to the franchisee in terms of giving the right product, marketing, logistics, give you analysis, get customers into your store,
It is all that we will be able to. The brand strength will completely be with you. Franchise potential is, so we are ready to roll out about 100 stores in the next 4 to 5 years. And, we have the capacity and the foundation to do that. Hopefully, with your support, we will get there. Sandeep, next slide, please. Yeah, so this is basically what I wanted to tell you in terms of how we're looking at even 2-tier and 3-tier cities, and of course larger cities like Cochin, you know, Hyderabad, Coimbatore, and all these areas too. So this is a quick SWOT analysis of what we can do. I think we can move into the next slide. So everybody will probably seen this anyway. So basically, I'll come down to the. You can go to the previous slide. To the previous slide. Sandeep, the previous slide. Yes, the franchisee proposal. So Okay. I'm showing the franchisee proposal now. Okay. So basically, what we're saying is we require about a 2,000 square feet. So our store is designed to just keep inventory. It's largely like an experience center with a good amount of inventory as well. So we keep places to sit, so you can discuss and talk to our experienced people in the store, consultants, stylists, masters. So these things takes about 1.5 hours. So we give more like an experience space for them. So the setup cost is about 53 to 55 lakhs for the interiors, basically. And then there's a non-refundable franchise fee of 5 lakhs, which including GST comes 5.9 lakhs. And inventory that we will provide is 65 lakhs. So we will take a refundable deposit of 65 lakhs from you. And then the property deposit that you'll have to bear, that will be at actuals. So total investment will roughly be at about 1.2, 1.3 crores. So the margin that we will offer on tailoring is 20%, and the margin on sales is about 35%. So if you do about 20 lakh, 30 lakh rupees business a month, so 80% of that will be on 35% of the 35%, and 20% of the business you will get 20%. And break even on capex, what we are seeing is about 2 years, that's 24 months, and break even on capex and inventory is about 3 years. So agreement period that we have discussed upon is 7 years, and it can be extended to 9 years as well, because most of the time the kind of interiors that we do last well beyond 9 years as well. In fact, most of our stores are 12 years old, and we're still continuing with the same interiors with just a little bit of touch up and painting and polishing. So this is what we're looking for in a partner. So we're looking for individuals having experience and knowledge of retail industry. It doesn't mean you have to have major experience, but a fair amount of knowledge is sufficient. Young entrepreneurs and corporate employees wanting to have their own businesses. Today we're seeing that a lot of people who are just out of their 40s are looking forward to starting their own businesses. We feel that this is the right place for them to come and join us. Having finished your corporate career and you want to start something that you're passionate about, this is what you should look. We are the right people for you. And even the young entrepreneurs, for example, people who are part of the family business and they have got 2 or 3 brothers, and one brother wants to move on and get into another business. So that's us. You can come and look at us. If you have a prior experience in retail and apparel industry, it will help, no doubt. But what we're really looking for is people with the local market connect. For example, if you are based in Coimbatore or in Cochin, we would like you to bring in that local market, maybe your friends, your family, come and shop at the store, and also bring in good kind of properties which you will have better knowledge than us. And obviously, needless to say that we require investors with a good financial support and backing. So, like I mentioned, so if you want the bottom blue corner is what we're looking at initially to start off with, and then we want to roll out into the other areas as well. So Bangalore, Mangalore, Kochi, any South Indian city, we're love to start with immediately. Yeah, and in terms of brand support, you will get total brand support. We will give you the complete store design. We will help you choose the location and approve it. We will get you all the things that you required, software, technical know-how,
product and staff Right. training completely provided by us, and marketing also will be done by us. Inventory planning will be done by us, so you don't have to worry about inventory. Inventory is completely our headache. We will manage the inventory completely on our side. Any low selling stock or slow moving stock, we will take. That's our responsibility, not yours. Then once we open the store, we will before we open the store, we'll understand the market, and if it requires a little bit of a new product, then we will able to give you, especially for your store, create it. Basically, what we're trying to say is we can get as localized as we can to bring in the customers. Promotion and schemes will be done by us. Stock rotation and correction, we will completely take care of us. Celebrity endorsements, we will bring in. We'll bring in a lot of influencers who will come and visit the stores. Please check our Instagram page and our Facebook page, and you will see what we're doing with the influencers. We tie up with many local associations as well and bring in the business. And of course, the entire support of the tailoring, that is the entire backend, will be handled by us. And we will take care of the tailoring. So you don't have to worry about hiring tailors, hiring masters. We will do that for you. So that is in terms of the brand support that we will provide. And so the question is, why would you want to partner with us? Of course, this is because of 100 years legacy. The people look to us because we feel that we've garnered a lot of trust with the people. We have already about 200,000 customers in the system that we can garner with. We get a lot of customers from South India already, like from Cochin, Coimbatore, Bangalore. Customers come to us already, and we can easily tap into them. And needless to say, we have a wide range of high quality products. We have very exclusive products. For example, we have a suitings which has actually a gold thread in it, made in the UK. We have fabrics which are 240 counts wool, which is very, very rare. All that is available with us. And of course, we got the basic stuff. People who want to buy a suit. So Mr. Naveen, your voice is breaking a bit. So we are talking about the ideal, why partner with PN now? As I said, it's a 100-year legacy brand which speaks a volume. It's a third generation which is doing this business. And, obviously, since you have 100 years of connection, 100 years of business experience, you come with those connects. So those connects have also help you garner products, services and extend those services to the franchisee partners as well. Our today's theme is iconic brands, and when we talk about iconic brands, I think with this brand P&R, we can also attach the word legacy because they are doing this for last 100 years, and 100 years is a good amount of time to tailor and master the business, and they have been doing the same. So as I can see to a couple of questions which I want to take. When somebody said, "How do we handle tailoring?" So that is directly being handled by the brand. So you can send your mass requirement. You can send your specific requirements that can be done. As Mr. Naveen said, that both the options are available, wherein you can get the specific tailoring done for a particular fashion which you're looking for. Otherwise, you can also go for a mass tailoring options, and that is what that capacity is also being there, right? So moving on, we have our next brand that is also another iconic brand, and a brand which is Franchise India is really we are really confident enough in this brand, and we are partnered with this brand. We are really joyous to invite Mr. Manish from Jaipur Kurti to talk about the business opportunity of business opportunity. Mr. Manish, please share your screen and take us to the business opportunity. Thank you so much, Sandeep, and good afternoon, all. Nice to be on the Franchise India platform once again. Can you allow me to share my screen? It is allowed, sir. You can share your screen. No, I cannot. You have to make me use.
You have joined with the panelist later. You cannot start the screen while because Mr. This you have to this like maybe take out this currently what you are projecting. Yes. I have done it. Yes. Now you can probably check. No, still not done. Okay. Now you are possibly able to do that. Sure. Allow me a minute only. Give me a minute, okay? Yeah. Right. So is it visible to all? Yes, it is visible. So we are actually we started our brand in 2012 as a D2C brand by the name of Nandini Creation Limited, and it is an NSE listed company. Or since people are saying that we have to talk in Hindi also, so I'll be mixing the Hindi and English both. So ये जो ब्रांड था अनुज मुंद्रा वंदना मुंद्रा ने शुरू किया था, and we have three brands actually, Jaipur Kurti, Amaiva by Jaipur Kurti, and Desi Fusion. Currently, we are talking about Jaipur Kurti. Along with this, Amaiva will also be a part of that store which we are talking about. So here we have won the award from the platform which we are currently in. From Franchise India, we have got the award for best women's ethnic wear, best franchiser in the women's ethnic category. So this is our brief journey. We started in 2012. In 2016, we gone with the listing in NSE as NSE emerged. Then 2018 onward, we have started our retail journey where we have started a few stores in Jaipur. Then we launched our another brand called Amaiva. Then we transited to the main boards, this NSE main. In 2022, we started our franchisee operations. We opened first franchisee store. Then we onboarded Madhuri Dixit as our brand ambassador in 2023. And then 2024, we got Best Franchiser Award for this women's ethnic category. And then we, in 2024 itself, we have started shop-in-shop operation. So currently, we are available in more than 50 plus shop-in-shop across the UP and Punjab territory. So before like going into the brand detail, we want to emphasize on our values, which is trust, quality, and customer satisfaction. Why Jaipur Kurti? Jaipur Kurti is an NSE listed company. It has a legacy of 12 years. So we have got already customer base created at each and every city of India. Wherever we are opening any store, we are getting a very good response from each city because हमारे पास वहाँ पे already customer base है. We have just to tell our existing customer base that we have come closer to you and please visit our stores. So that gives an edge as a brand. Other than that, we have got a great brand recall because we are there in the marketplace. तो जो भी marketplace में search करता है या जो भी buying करता है विमेंस कैटेगरी में, वी आर देयर बिकॉज हमारी बहुत हाई स्पेंड है मार्केटिंग पे. तो सारे मार्केट प्लेसेस पे जब भी कोई विमेंस एथनिक कैटेगरी सर्च भी करेगा या वो लॉग इन करेगा तो विल बी विजिबल टू देम इन सम और द अदर पैनल.
इसके अलावा ब्रांड नेम जयपुर कुर्ती गिव्स एन एज टू अदर टू अस, बिकॉज जब भी हम किसी स्टोर में या किसी, जैसे हमने अभी रजौरी गार्डन भी ओपन किया है, तो जयपुर कुर्ती नाम देख के भी कस्टमर कम्स इन, बिकॉज एवरीबडी नोज दैट जो भी कस्टमर, जो भी कुर्तियां या जो भी बनती हैं उसका 80% प्रोडक्शन जयपुर से होता है। तो पीपल कम टू सी कि वेदर कोई बांधनी है या आपका ब्लॉक प्रिंटिंग है, तो हमें एक 5 से 10% का एडिशनल जो फुटफॉल है वो जनरेट हो जाता है हमारे पास। वी आर अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड फुल स्टैक मॉडल, मतलब हमारा सारा कुछ इन हाउस है, फ्रॉम डिजाइनिंग टू मैन्युफैक्चरिंग एवरीथिंग इज इन हाउस। हमारा सेलिब्रिटी एंडोर्स मॉडल है, जो कि हमारी सेलिब्रिटी माधुरी दीक्षित हैज एंडोर्स्ड है ना, और लाइक शी इज देयर फॉर लास्ट 1 year एंडोर्सिंग अस। वी हैव गॉट कंप्रिहेंसिव कैटेगरीज अवेलेबल, तो हमारे लिए कोई भी जितनी भी विमेंस एथनिक में कैटेगरी है, स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम टू सूट सेट्स, सारा कुछ अवेलेबल है हमारे पास। We have got a very good, great value proposition for customer, because we are an affordable premium brand. So this is our tagline, मेरे दिल से क्लोजेट तक, by जयपुर कुर्ती by माधुरी दीक्षित. So this is what I was talking about, our categories. We have got kurta, kurti, suit sets, kurta sets, bottom wear, lounge wear, top and tunics. We have got jumpsuits also, dresses, coat sets, designer wear. We have got another category called plus size, wherein we cater 3XL, 4XL, 5XL, and it goes up to 6XL size. This is what I was talking about. We are a full stack model, from designing to manufacturing, everything is in-house. So currently we are available as in 14. We have got 14 EBO store operational, out of which 8 stores are company owned, company operated. 6 stores are franchisee and franchisee operated. We have got shop in shop models also. We are available 30 counters, 30 plus counters in UP, and Punjab also we have got 30 plus counters available. So these are all few glimpses of our stores. This is our the left side store is our Gurgaon DT Mega Mall store. Right hand side we have got this Bangalore store, which is in Commercial Street. Now I'll come to the financial part, commercial part. So for us, we have got like requirement of 800 square feet of space is required for Jaipur Kurti. It may go maybe it may go up to 1000 or 1200 also. So investment will be depending upon the square feet of what area we are taking. For 800 square feet, total investment will be somewhere around 35 to 38 lakhs, out of which unit fit out, like fit out cost, the interior part will take some 20 lakh rupees, and then VM material 60,000, franchisee fee will be 3 lakh rupees, IT hardware will cost you some 50,000 rupees. So if you sum it up all, it will go somewhere around 24 to 25 lakh rupees. We will be taking security deposit against inventory of 12 lakh rupees for 800 square feet, or maybe 1500 per square feet. So for 800 square feet, it will be 12 lakh, and we will be providing 3x of this value on MRP basis. तो मैं यदि आपसे 12 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहा हूँ, which is refundable, उसके अगेंस्ट में आपको 36 lakh rupees का इन्वेंट्री दूंगा, which will be on SOR basis. So SOR means whatever being sold, we will be replenishing that, and whatever remains unsold for a period of time, we will be taking it back. तो आपके पास कभी भी कोई डेड इन्वेंट्री का इशू नहीं रहेगा। इसमें मैंने प्रॉपर्टी का जो डिपॉजिट है वो मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, बिकॉज इट विल वेरी सिटी टू सिटी और मे बी जोन टू जोन। साउथ में 10 महीने तक का होता है, नॉर्थ में ये 2 महीने 3 महीने में भी क्लोज हो जाता है, तो डेट विल बी ओवर एंड अबव। सो यदि मैं ये फिट आउट कॉस्ट और इन्वेंट्री के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट सारा ऐड करता हूँ, 36 लाख रुपीज के आसपास इसका आता है, और बाकी 2-3 लाख रुपए 4 लाख रुपए यदि मैं ऐड कर दूं आपका लैंडलॉर्ड को जो आप दोगे सिक्योरिटी डिपॉजिट में, तो समवेयर अराउंड 35 टू 40 लाख रुपीज में आपका स्टोर रेडी हो जाएगा। इसमें मार्जिन पे आ जाते हैं। मार्जिन विल बी 35% ऑन फ्रेश। जब आप फ्रेश में बेचते हो, मतलब जब एंड ऑफ सीजन सेल नहीं चल रही होती है, उसमें आपका 35% मार्जिन रहेगा। वाइल यूएसएस हम लोग इसको मार्जिन को 25% कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे डीप डिस्काउंटिंग रहती है, हम भी करीब 30-40% का बर्न करते हैं, तो उस टाइम पे आपका मार्जिन 10% से आपका कंट्रीब्यूशन लेते हैं। बट ये जो 25% मार्जिन हम आपका करते हैं, उसमें आपका सेल कंपनसेट हो जाता है, बिकॉज उसमें वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं। नॉर्मली कोई भी कस्टमर होता है आजकल, दे नॉर्मली वेट फॉर द यूएसएस टू कम। तो जैसे एंड ऑफ सीजन सेल आता है, तो जो हम 10% का मार्जिन आपका जरूर कम होता है, मगर उसमें वॉल्यूम आपका 30-40% बढ़ जाता है। तो रेदर आपको एट द एंड ऑफ द डे जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो पॉजिटिव ही होती है एंड ऑफ सीजन सेल पे। सो मॉडल इज एसओआर, व्हिच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड।
सपोर्ट फ्रॉम ब्रांड, इट इज लाइक वी आर प्री ओपनिंग सपोर्ट में आपका लोकेशन का स्काउटिंग हम आपको हेल्प करेंगे, लोकेशन सिलेक्शन में हेल्प करेंगे, उसके फिजिबिलिटी देंगे कि व्हाट विल बी द व्हाट माइट बी द टोटल सेल्स पर मंथ। इसमें आपको स्टोर सेटअप करने के लिए, फिक्सचर प्रोक्योरमेंट करने के लिए हम वेंडर का सपोर्ट देते हैं। इसके अलावा हम ट्रेनिंग का जो ये स्टाफ का जो ट्रेनिंग रहता है उसका सपोर्ट देते हैं। ये दिस इज ऑल प्री ओपनिंग। इसके बाद ऑनगोइंग जो सपोर्ट है वो हमारा मार्केटिंग का सपोर्ट रहता है। ऑल द सेंट्रलाइज मार्केटिंग इज डन बाय अस। लोकल मार्केटिंग में भी ऑल्सो वी सपोर्ट 50% बेसिस। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सारा हमारा रहता है। इन्वेंट्री जो भी आपके पास अभी क्या बिक रहा है, या किस तरह का क्या सिल्यूट बिक रहे हैं, क्या प्राइस रेंज बिक रही है, या क्या कैटेगरी ज्यादा मूव हो रही है, वो हमारे पास सारा ईआरपी बेस्ड हमारे पास सॉल्यूशंस है, जिससे हमें पता चलता रहता है। एंड अकॉर्डिंगली वी मैनेज योर इन्वेंट्री। तो आपका जो रिप्लेनिशमेंट है हम सेंट्रलाइज उसको हैंडल करते हैं। ऑल्दो आपके कोई फीडबैक होते हैं या कोई रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी हम कैटर करते हैं। रिफ्रेशर ट्रेनिंग करते हैं हम लोग। ट्रेनिंग इज डन बाय अस ऑन प्रोडक्ट्स, सेलिंग स्किल्स, और कोई भी नया कैटेगरी या कुछ भी लॉन्च होता है तो सारी ट्रेनिंग इज ऑन अस। स्टोर ऑपरेशंस में हम हेल्प करते हैं, आपको एसओपीज देते हैं, किस तरह का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हम यूज करते हैं हमारे स्टोर पे उस तरह का हम आपको भी देते हैं, जिससे कि आपको रन करना इजी रहे। सीआरएम जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है दैट इज डन बाय अस। उसके लिए हमारे पास एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं, उसके थ्रू हम कस्टमर को दोबारा उनकी लॉयल्टी इंक्रीज करने के लिए, या वो दोबारा वापस आए, उसके लिए हम सारे एफर्ट करते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट डेवलपमेंट इनोवेशन, इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ये हम हमेशा करते रहते हैं, नई कैटेगरीज लॉन्च करना। जैसे हमने वी हैव रिसेंटली लॉन्च द कैटेगरी ऑफ आरटीएस रेडी टू स्टिच। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। इफ एनी क्वेश्चन संदीप जी, है ना, वी कैन टेक इट अप नाउ। Sure. So, there are two, three questions which I have received. One of them is being, when we are talking about the location support. So, Yeah, when you are giving the, when you are approving the location based on the sales forecast from your team, and somebody, a franchisee, is opening that store, after certain time, say after 6 months or a year, he finds out that this location is not working out for him. So, what kind of correct. support you have to put is going to be extended? या सो नॉर्मली व्हाट वी डू, यदि कोई हमने लोकेशन स्काउट करी है जहाँ पे, एंड इफ इट इज नॉट वर्किंग वेल, तो हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे जस्ट टू अंडरस्टैंड कि किस तरह का मार्केट है, वाई, यदि कस्टमर का फुटफॉल कम है तो वो क्यों कम है, तो हम थोड़ा सा मार्केटिंग में भी सपोर्ट करते हैं। क्योंकि सी वी आर टेक एनेबल्ड कंपनी, जहाँ हमने D2C से ही शुरू किया था, तो हम डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा सा स्ट्रांगली करते हैं, थोड़ा बहुत विजिबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से देखते हैं कि किस तरह वहाँ पे फुटफॉल बढ़ पाए। तो किसी एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि आपके पास जो जितना फुटफॉल आएगा उसी में से आप कन्वर्जन निकाल पाओगे। और यदि कोई स्टोर अच्छा नहीं कर रहा है तो 99% चांसेस विल बी कि वहां पे फुटफॉल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उतना नहीं आ रहा है। तो वी ट्राई टू इंक्रीज द फुटफॉल। उसके लिए हमें जो भी करना होता है, यदि हमें एडवोकेसी एक्टिविटी करनी है, एक बीटीएल करना होता है, बिलो द लाइन जो हम जिसको मार्केटिंग बोलते हैं, या एटीएल करना होता है, अबव द लाइन मार्केटिंग, न्यूज़पेपर एड, या किसी मॉल में है तो मॉल में कोई एट्रियम वगैरह में स्पेस लेना होता है, तो वो सब में हम सपोर्ट करते हैं। एंड वी ट्राई टू मेक स्टोर प्रॉफिटेबल। So, do you also help him relocate? Yeah, obviously, if franchisee and we are like maybe 100% sure कि there is a problem with location और यहाँ पे footfall नहीं हो सकता है despite of doing all the marketing, then we try to relocate also. We are open to relocate. उसके लिए हम कोई भी फ्रेंचाइजी या इसमें कोई भी ये नहीं करते हैं। और इसमें रिलोकेशन के लिए अगेन वी डू अ स्काउटिंग, और जो भी दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है वहां पे हम जाके उसको रिलोकेट कर सकते हैं। वी आर ओपन टू रिलोकेट एनी टाइम। What's the approximate radius for your store? So normally we do 3 kilometers. See, it depends upon the radius, depends upon the density of the city, but normally we keep it 5 kilometer, है ना। बट यदि दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं तो देयर विल बी फ्यू स्टोर जहां पे मुझे 3 किलोमीटर्स भी ओपन करना पड़ सकता है। रीजन भी कि अब सिटीज बहुत डेंस हैं। इसी तरह यदि मैं बेंगलोर देखूं तो कई बार वो जो किलोमीटर्स का जो क्राइटेरिया है वो एग्जैक्टली फिट नहीं होता, बट फिर भी हम दोनों, मतलब जो हमारा एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी है उसके कंसेंट के बाद ही हम कोई नया स्टोर ओपन करते हैं या कोई नए स्टोर की डिसीजन करते हैं, और उसमें भी फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल देते हैं हमारे एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी को। अच्छा, so if I talk about North India, specifically Delhi, what's the performance of the existing store? I'm sure I've seen the Rajouri Garden outlet, and that's a fantastic store. So, and also Really? there is another in Gurgaon as well. Yes, And exactly. I've seen the video for the same as well. So can you please tell us how they are performing? Yeah, so Gurgaon store now it's completing 1 year. In July it will be completing first year, and it has done average sale of YTD average is 15 lakh rupees.
So during Diwali and all, it has gone to 21, 22 lakh rupees, and the lease sale was 12 lakh rupees. So averaging it out, and it will be average. It is averaging somewhere around 15 to 16 lakh rupees a month, which is a 650 square feet store, but it is a very high potential store, and because we have given a very good service, so repeat buying is very high. Similarly, Rajari Garden, it's third month operational now, and first month it did 17 lakh rupees in 18 days, and then last month complete month it did 28 lakh rupees of sale. So it is also doing well. It is averaging some lakh rupees or maybe 90,000 per day. Okay, and last but not the least, when the franchisee partner who is choosing your outlet for local promotions, what kind of help which you get from you? Yeah, so like DT Mega Mall, we have taken few spaces in atrium. We have taken few spaces in this lift door, and so this is what we do in malls, because malls is like malls are like maybe जहाँ पे already बहुत सारा footfall होता है. We have to just direct them to our store. Similarly, Rajouri Garden में, क्योंकि Rajouri Garden में already footfall इतना ज़्यादा है, तो we have taken few this billboards to promote our store. Otherwise also there are a lot of footfall जो हमारा, यदि हमने फसाड बहुत अच्छा बना रखा है तो वो कस्टमर देख के ही इतना अच्छा फसाड और इतना अच्छा प्रोडक्ट का मेरी विंडो का डिस्प्ले प्रॉपरली करते हैं, तो कस्टमर अंदर आ जाता है, और एक बार यदि अंदर आ गया तो देन योर कस्टमर सर्विस एंड योर प्रोडक्ट्स स्पीक्स, और उसके बाद यदि एक बार वो बाइंग हो जाती है तो फिर वो रिपीट कस्टमर बन जाते हैं. सो ऑल दिस वी डू. अच्छा, इसके लिए आप आइडियल लोकेशन किसे मानते हैं, मतलब मॉल में या जहाँ पे डिजाइनर स्टोर्स है उसी जगह पे, राइट? वी आर नॉट लुकिंग एट एनी अदर प्लेसेस अदर देन डिजाइनर स्टोर्स के जो जगह होती है, या नॉर्मली क्या होता है कि ऑर्गेनिक फुटफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं कितनी भी मार्केटिंग कर लूं, मैं जनरेट कर सकता हूं, बट ऑर्गेनिक फुटफॉल जहां पे बाय डिफॉल्ट फुटफॉल होता है, तो एक तो वो स्पेस होता है मॉल. मॉल में तो एनीवेज कहीं भी आप खोलोगे तो वहां पे कुछ ना कुछ फुटफॉल तो आता है. इसके अलावा यदि मैं हाई स्ट्रीट की बात करूं तो हाई स्ट्रीट में हम प्रेफर करते हैं जहां पे नियर बाय हमारे सिमिलर लोकेशन, मतलब सिमिलर ब्रांड हो, हमारे कॉम्पिटिटर ब्रांड हो, या फिर वो विमेंस ओरिएंटेड मार्केट हो. सो इस तरह से हम कुछ क्राइटेरिया रहते हैं जिसको हम चेक करते हैं, उस हिसाब से भी हम फिजिबिलिटी बनाते हैं. फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी हम इसी बेसिस पे बनाते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे सेक्टर 14 गुड़गांव वाला मार्केट है जहाँ पे मतलब मोस्टली हाई एंड सैलून्स वगैरह है, जहाँ पे वुमेन वगैरह बहुत आते हैं, एंड देयर आर करेक्ट. लॉट ऑफ फास्ट फूड जॉइंट्स आल्सो व्हिच आर टू द लाइकिंग ऑफ यंग जनरेशन एंड लॉट ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन, सो दोस करेक्ट. लोकेलिटीज आर परफेक्ट फॉर जयपुर फोर्ट, राइट? Yes, yes, but normally we see. I think Mr. Manish is joining us back. So I believe he has some network issue. Just to close this point, we are looking at places where there will be malls, or there will be similar brands, who are into women fashion. Some designer brands can be also there. For Delhi, I can talk about Khan Market or a South X. These are the good places for a brand like Jaipur Kurti. These are proven brand, NYC listed, backed by good backgrounds, and has been running in multiple outlets across Pan India. So we are ready for one-on-one queries. I'm leaving the Franchise India helpline and email ID so that we can have a one-on-one discussion. Please write to us. We can arrange tri-party calls with the brand and have more in-depth discussion as per your queries. Thank you so much, audience, for your presence. And with that, we'll be wrapping up this call. And